Hello everyone, I welcome you to my channel which is Legal Pedagogy, and this is part 2 from the month of March 2022. As you all know, the current affairs play a very crucial, very vital role if you are preparing for any of the law entrance examination. So in this series of important current affairs, we are focusing upon those events from which questions can be asked in any of the law entrance examination. Apart from this, if you want to attend my live and recorded lectures, you can collect all the relevant information from the contact number which is given on the screen. So let's start with this video. Friends, the first question is, which state recently signed a pact with Assam to resolve the border dispute? तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि किस राज्य ने असम के साथ एक समझौता किया था जिसके थ्रू उन्होंने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाया है. So the name of the state is Meghalaya. They had a long history of a border dispute with Assam which has been resolved now through a mutual agreement, through a mutual pact between the two states. तो मेघालय ने दोस्तों असम के साथ अपना बहुत पुराना बॉर्डर से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुलझा लिया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? द फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. So why is it important? It is important because of Ukraine-Russia war. So the Secretary General of NATO is Jens Stoltenberg, and his tenure has been extended till September 2023. तो दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है जेन्स स्टॉल्टनबर्ग, और इनका नाम जानना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यूक्रेन रशिया में जो अभी वॉर चल रही है उसमें नाटो का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. इसकी वजह से इनका नाम जानना बहुत क्रूशियल हो जाता है. The next question is, who took oath as Goa's chief minister? As you all know that there were assembly elections which took place in 5 states, out of which BJP won the 4 states. So the question is, who became the chief minister of Goa? So the name of the chief minister of Goa is Pramod Sawant. For the second consecutive term, he became the Goa's chief minister. तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, जिसमें कि 4 राज्यों को में जीत हासिल की थी बीजेपी ने. तो गोवा के मुख्यमंत्री दोस्तों बनाए गए हैं प्रमोद सावंत. ये दूसरी लगातार बार है कि प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पे एक्ट करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2022? सो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2022 की थीम क्या थी, ये सवाल है. सो द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे वाज इन्वेस्ट टू एंड टीबी, save lives, and when it is celebrated every year on 4th of March. The next question is, which state became the first state to go paperless assembly proceeding under National E-Vidhan application? So friends, National E-Vidhan application was launched to make the assembly proceedings to be digitalized and to avoid the use of the paper in the assemblies. So under this particular application, Nagaland became the first state to go paperless assembly. तो सवाल दोस्तों आपसे ये पूछा जा रहा है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के अंतर्गत पहला राज्य ऐसा कौन सा बना है जिसकी विधानसभा की प्रोसीडिंग बिना पेपर के चली हो? तो नाम है दोस्तों नागालैंड. इसको याद रखिएगा. एक डिजिटल इंडिया की तरफ एक तरफ से फोकस करता है, पेपर को बचाने की कोशिश है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with regard to joint military exercise, that is Dustlik. The name of the joint military exercise is Dustlik. Dustlik joint training exercise took place between India and which country? So India and the military forces of Uzbekistan participated in this joint training military exercise, the name of which is Dustlik. तो दोस्तों Dustlik नाम की joint military training exercise हुई भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में, और कहाँ पर हुई? It took place in Uzbekistan itself. So you have to remember this as well. The next question is, which is the most polluted capital of the world as per World Air Quality Report 2021? Friends, every year World Air Quality Report is published by IQ Air. This is a Swiss organization. So as per World Air Quality Report 2021, the most polluted capital of the world is Delhi. And if you are asked which is the most polluted city as per World Air Quality Report 2021, it is Bhiwadi, present in Rajasthan, followed by Ghaziabad in Uttar Pradesh. So friends, आपसे सवाल ये पूछा गया था
कि एज पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जिसको पब्लिश करता है IQ एयर, एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड राजधानी विश्व की कौन सी है, तो उसका नाम है दिल्ली। पर अगर आपसे सवाल ये पूछे कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन सा है एज पर दिस रिपोर्ट, तो वो है दोस्तों भिवाड़ी, उसके बाद आता है गाजियाबाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज World Meteorological Day is observed every year on which date? So World Meteorological Day is observed every year on 23rd of March. The theme for this year was early warning and early action. तो World Meteorological Day हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और इस साल की इसकी थीम थी early warning and early actions. You don't need to worry, मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं important military exercises, days, उनकी themes, awards, honors, इन सबको भी कवर करूंगा। The next question is, as per United Nations World Happiness Report 2022, India secured which rank? So India stood at 136th rank as per the United Nations World Happiness Report 2022. In the comment section, you have to tell me what was India's ranking in 2021 report of World Happiness. So the ranking of India as per World Happiness Report 2022 is 136th and it is topped by Finland. So Finland is considered to be the most happiest country as per the World Happiness Report 2022. तो सवाल ये था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जिसको यूएन पब्लिश करता है हर साल, भारत की रैंकिंग उसमें क्या रही, तो वो है 136 और टॉप मोस्ट पे रही फिनलैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 51st प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022? So Pritzker Prize is given in the field of architecture every year. And why is it so special this year? Because Francis Keret, he became the first African to win this prestigious prize named as Pritzker Architecture Prize for the year 2022. तो दोस्तों सवाल पूछा गया है कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 किसको मिला है, तो मिला है फ्रांसिस केरे को। इनका नाम इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये अवार्ड हासिल करने वाले पहले अफ्रीकन बने हैं। तो दोस्तों this was part 2. If you liked the content which is being spread through this channel, kindly share this channel to as much people as you can and do like it as well. Thank you so much.